बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडेड प्रोजेक्ट एडवाइस में हम दरअसल इंडस्ट्रियल मशीन्स की मॉनिटरिंग और उनके अंदर आने वाले फॉल्ट्स को पहले से प्रेडिक्ट करने के लिए एक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बेस्ड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। इस तरह के सिस्टम्स पाकिस्तान में एज सच नहीं अभी तक डेवलप हुए और ये इस तरह की एक पहली कोशिश है। ऐसे सिस्टम बाहर के ममालिक से इम्पोर्टेड हालत में इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाए जाते हैं, लेकिन ये इतने महंगे हैं कि सिवाय इसके कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में इस्तेमाल की जाए और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करें, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही। हम ये कर रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को एक लो कॉस्ट तरीके से और लोकल एक्सपर्टीज़ और लोकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए डेवलप कर रहे हैं। This is Dr. Majida Kazmi, Principal Investigator of this Project Advice. So Project Advice is a IoT and artificial intelligence based predictive maintenance solution. This project got funding from National Center of Artificial Intelligence and total funding is almost 13 million rupees. For this project, our academic collaborator is NUST. Beside academic collaborator, we have industrial partner, 𝐀𝐃𝐕𝐈𝐂𝐄 Foods is our industrial partner and FS Technology Solution is our commercial partner. The functionality of advice is divided into three parts. First is data acquisition method, second is data collection mechanism, and third is analytics run on a data. For data acquisition, we have developed an IIoT based sensor, and this IoT sensor using MQTT protocol to collect the data. This data is stored on a database which is reside on the cloud using time series databases, and after collection of our data we are running predictive maintenance algorithm using deep learning to basically calculate the remaining useful life of the motor. So our product is efficient, it is low cost and it is customized to market needs. We with our commercial partner already surveyed market and we are very happy that market is ready to take up this technology for the sake of reducing downtime and its associated cost. I would like to say thanks to our industrial partner 𝐀𝐃𝐕𝐈𝐂𝐄 Foods for providing us valuable data, for providing us insight and an opportunity to test and validate our product on their plant. And last but not the least, I would also like to say thanks to National Center of Artificial Intelligence for funding us to develop this wonderful product. Thank you so much.